आज हम देखिए लास्ट क्लास तो हम वेल एंड स्प्रिंग विषय तो जाइए। तो आज हम देखिए कौन ना आर्टेसियन सिस्टम कौन है। आर्टेसियन वेल कौन, आर्टेसियन सिस्टम कौन, आर्टेसियन एक्विफर से कन्फाइंड एक्विफर को लेकिन ये टर्म गुड़ाक आसी तुम डिटेली भितर जा सी कुछ आर्टेसियन कंडीशन अकर्स इन द कन्फाइंड एक्विफर एंड जियोलॉजिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टेसियन सिस्टम आर एज फॉलोज। बुझे तो केमी आर्टेसियन सिस्टम गुड़ाक डेभलप हो डेवलपमेंट ऑफ आर्टेसियन सिस्टम जोटा कि रिक्वायर्ड जियोलॉजिक कंडीशन कौन कौन जियोलॉजिक कंडीशन सब रिक्वायर्ड अच्छी गोटे आर्टेसियन सिस्टम डेभलप होगा आम देखा। बुझे तो से कहे कन्फाइंड एक्विफर से कहे दैट इज परमिएबल बेड लाइक सैंडस्टोन मस्ट बी ओवरलेन एंड अंडरलेन बाय द इम्परमिएबल बेड लाइक सेल। बुझे तो कन्फाइंड से कहे इन नेचर सिक्वेन्स ऑफ अल्टरनेटिव सेल एंड सैंडस्टोन बेड अगर माने गोटे कन्फाइंड एक्विफर केतबेले आम कहे ना जितेबाला गोटे परमिएबल लेयरटा व्हिच इज सैंडविच्ड बिटवीन द सैंडविच्ड बाय क्या द्वारा दीटा इम्परमिएबल लेयर मान सपोज यहीटा लेयरटा है गोटे परमिएबल लेयर आ ऊपर लेयरटा हूँ इम्परमिएबल आई तल लेयरटा को कहुए इम्परमिएबल। तो मैंने दीटा इम्परमिएबल लेयर भितर गोटे जदि परमिएबल लेयरटा आसला ताकू आम कहे कन्फाइंड एक्विफर है। सब देख एव्री बीट माने एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट जिनस एगुड़ा तुम पढ़ एगुड़ा तुम जो फाइनाल ईयर हम हाइड्रोजियोलॉजीटा इंपोर्टेंट कम देव ये अप्लाइड जियोलॉजी है। द सीक्वेंस मस्ट हैव ए ओपन एंड टू रिसीव प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर ए टिल्टेड फॉर्मेशन फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट है। से कहे द सीक्वेंस मस्ट हैव ओपन एंड टू रिसीव द प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर माने ये जो सीक्वेंसटा रही जो तुम गोटे परमिएबल लेयर इम्परमिएबल लेयर परमिएबल लेयर किए परमिएबल लेयर सैंडस्टोन इम्परमिएबल लेयर किए सेल कहीं सेलटा हूँ हाईली पोरस कादुआटा किंतु माने पोरस पोर स्पेसीज गुड़ाक नॉट इंटरकनेक्टेड सो दैट से सेल लेयरटा हूँ बाउंडेड बाय द सैंडस्टोन लेयर। बुझे तो ये जो सीक्वेंसटा से कहे रिसीव्स द प्रेसिपिटेशन माने जो वाटर जो प्रेसिपिटेशन हवा द्वारा जो वाटरटा आसे ताकू से रिसीव करे स्टोरेज करे है एंड टिल्टेड फॉर्मेशन फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। से कहे एडेक्वेट रेनफॉल टू सप्लाई द वाटर टू द एक्विफर सब टर्म गुड़ा बुझ केमती माने वाटरटा स्टोरेज हो रिचार्ज हो क्या थ्रू द प्रेसिपिटेशन बा रेनफॉल माने से कहे एडेक्वेट रेनफॉल हवा द्वारा वाटरटा कौन करे सप्लाई करे टुवर्ड्स द एक्विफर आड़ को सप्लाई हुए एंड स्टोरेज हुए। In such an environment where the above condition are met and artesian system develops मैंने यही सब एनवायरमेंट आर्टेसियन सिस्टम डेवलप करे एंड दिस एक्विफर इज सैचुरेटेड विथ वाटर अंडर प्रेशर ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एक्विफर इज सैचुरेटेड विथ वाटर अंडर प्रेशर इज ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओबियसली कहीं से कहे जितेबाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माने वाटर अंडर प्रेशर मीन से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशरटा इज ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम से जो बिलो द वाटर टेबुल जो आम जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर पढ़ी ये गोटे पढ़ी वाटर टेबुल रु तलू जिते जावा से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज मोर दैन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिते वाटर टेबुल रु आम उपरको आसवा से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशरटा से कम हम तमें एटमॉस्फेरिक प्रेशरटा से मोर हम यहाँ सब इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ा मन रख कहीं कारण आम जाने वाटर टेबुल ऊपर रॉक पोर स्पेसेस गुड़ाक पार्टली फिल्ड विथ एयर एंड पार्टली फिल्ड विथ वाटर तेणुक एयर रहा मैंने एटमॉस्फेयर मैं ओबियसली आम जिते उपरको डिबा एटमॉस्फेरिक प्रेशरटा बढ़ एटमॉस्फेयर आड़ आसे आते तलू जावा से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ से जिनसा से कहे द एक्विफर इज सैचुरेटेड विथ वाटर अंडर प्रेशर ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ द वाटर टेबुल माने वाटर टेबुल ये जो सपोज वाटर टेबुल ये डेप्थ अच्छी ये अलग डेप्थ से कहे द डिफरेंस इन डेप्थ एलिवेशन ऑफ द वाटर टेबुल इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक हेड माने हाइड्रोलिक मीन्स वाटर हेड जोटा कह बुझे तो से कथा कहला जिते माने जो वाटर टेबुल जो डेप्थ बा एलिवेशनटा डिफरेंट आसे कौटी अधिक डेप्थ रे वाटर टेबुलटा देखा जाए तो कौटी कम डेप्थ रे देखा जाए तो ये जो डिफरेंस आसूसी ये डिपेंड करुँच क्या ये कौन कहुए ना हाइड्रोलिक हेड डिफरेंस। बुझे तो मैंने सपोज हेड डिफरेंस कि पाइबा सपोज एटी डेप्थ एति आउ एटी एति
ये जो स्लोपटा रहा ये जो सपोज आम गोटे बेस मेजरमेंट करिए है ए पार्ट रु एटा डेप्थ एतिक ए पार्ट रु डेप्थ है एतिक डिफरेन्सटा के ये डिफरेन्स बुझला तो हेड डिफरेन्स हाइड्रोलिक डीएच चेंज इन हेड तक कहुए and the attribute of hydrostatic pressure to the water in the confined aquifer. This attributes the hydrostatic pressure to the water into the in the confined aquifer. And confined aquifer water ta pressure की पड़ुची. When a well penetrated the confined aquifer, water automatically rises up to a level which is equivalent to the water table. है से कौन कहूँ ना when a well penetrated well से कुछ when जिते बड़े गोटे well penetrates the confined aquifer. Well means आम जो सपोज गोटे वेलटा खोलिले वेल जो पानी कूह जो खोलुचे सी जो पेनिट्रेट कला गोटे कन्फाइंड आक्विफर माने आम खोली खोली कौन होचे डाउन द अर्थ जावा द्वारा जो गोटे कन्फाइंड आक्विफर को सी कट कर इंटरसेक्ट कर वाटर ऑटोमेटिकली राइजेस अप टू द लेवल वाटरटा धीरे धीरे कौन कर वेल थ्रू झरी झरी ऊपर को आस उठी उठी व्हिच इक्विवेलेंट टू द वाटर टेबल नियर द रिचार्ज जोटा कि वाटर टेबल बोली आम तक कहूँ ओबियसली गोटे आक्विफरटा कट करुच मैंने से वाटर टेबलटा कट कर से कहूँ बुझा तो वाटर टेबल नियर द रिचार्ज एरिया सच वेल आर नोन एज आर्टेसियन वेल से कहुए आर्टेसियन वेल बुझला तो आर्टेसियन वेल कौन कहला ना जिते बड़े आम इफ ए डेवलप ए वेल है when they intersect or penetrate the confined aquifer the water from that aquifer है कौन हुए rises upward direction and such well is known as the artesian well बुझला तो जमी सपोज देखो डायग्राम ये देछि है ये देखो एटा कन्फाइंड आक्विफरटा मोर बुझला तो ये जो लाइन ये जो लाइनटा ये रिजन को कहुए कन्फाइंड आक्विफर बुझला तो ये रिजन को देख खोला सब बुझला तो ये सब खोलाई वेल गुड़ाक डिफरेन्ट वेल सब खोलाई ताने मैंने कौन है आक्विफर को आसी कट कले इंटरसेक्ट कले तो ए रिजन रु वाटर कौन हम धीरे धीरे ऊपर को राइज कर जदि ऊपर को राइज कर पड़ेगा कहुए फ्लोइंग वेल आदि ऊपर को वाटरटा राइज करके पूरा ऊपर को न आस पारा ताले कहुए नॉन फ्लोइंग वेल बुझला तो यहाँ देख यहाँ ग्राउंड सरफेस यहाँ तुम गला ये गला ये ऊपर को पड़े बुझला तो ସେଇଟା से कहूँ जोटा फ्लो करूँ फ्लोइंग वेल आटा दुटा आर्टेसियन वेल मन रखता ताने आर्टेसियन माने कौन आर्टेसियन सिस्टम गोटे वेल डेभलप हुए ताने आर्टेसियन वेलटा कौन कहला दोज वेल व्हेन जिते बड़े व्हेन मेकिंग ए वेल डिगिंग ए वेल इनटू द कौन कन्फाइंड आक्विफर व्हेन इट पेनिट्रेट्स द कन्फाइंड आक्विफर द वाटर फ्रॉम दैट कन्फाइंड आक्विफर अंडर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंडीशंस है जिते बड़े वाटर गुड़ा कौन था वाटर गुड़ाक तुम अंडर प्रेशर कंडीशन था आक्विफर गुड़ाक आते बड़े से वेलटा आम खोलती से वाटर गुड़ा कौन हुए अपवर्ड राइज करे ये देखो राइज कर फ्लो करे तो सेटा कहुए आर्टेसियन वेल क्लियर तो बुझे तो एंड द लेवल अप टू व्हिच द वाटर राइजेस इज द प्रेजियोमेट्रिक सरफेस जो पर्यंत वाटरटा राइज करें ता कह कथा आम यदि वेलटा खोलुचे वाटरटा उठी उठिकी जेपर्यंत जाए आसीपर नट फ्लो जेपर्यंत जाए आसूची वेल से ओटा कहुए पिजोमेट्रिक सरफेस बुझला तो कहुए अपर लेवल ऑफ सरफेस ऑफ द वाटर व्हेन वी मेक ए वेल इनटू द confined aquifer the water level rises towards a certain level and that level is called piezometric surface बुझला तो जितेबाला आम गोटे वेल खोलुचे वेल खोलिया द्वारा वाटरटा अंडर स्टैटिक प्रेशर कंडीशन में था कौटी आक्विफर रे सो दैट वाटरटा राइजेस टुवर्ड्स थ्रू द वेल इनटू द सर्टन लेवल एंड दैट लेवल इज कॉल्ड piezometric surface बुझला तो आर्टेसियन वेल देखो बहुत इंपोर्टेंट जिनस गुड़ाक आर्टेसियन वेल कौन पिजोमेट्रिक सरफेस कौन बुझिपार आर्टेसियन वेल मैंने कौन जदि आम गोटे वेल खोलिबा वाटरटा राइज करा जदि ताको आम कह आर्टेसियन वेल पिजोमेट्रिक सरफेस कौन कौन ना वेल खोलिया द्वारा वाटरटा जी पर्यंत राइज कर दैट अपर लेवल सरफेस कॉल्ड पिजोमेट्रिक सरफेस बुझला तो दुटा इंपोर्टेंट मन एंड द पिजोमेट्रिक सरफेस ऑफ ए कन्फाइंड आक्विफर इज एन इमेजिनरी सरफेस कोइंसाइडिंग विथ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लेवल ऑफ द वाटर इन द आक्विफर बुझला तो
से कौन पिजियोमेट्रिक सरफेस ऑफ द कन्फाइंड एक्विफर गोटे कन्फाइंड एक्विफर पिजियोमेट्रिक सरफेसटा इज ए इमेजिनरी सरफेस एटा गोटे हूँ कौन इमेजिनरी सरफेसटा एंड कोइनसाइड विथ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एटा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कोइनसाइड करिवो लेवल ऑफ द वाटर इन द if the ground surface level is lower than the piezometric surface जेतेबेले ग्राउंड सरफेस टा माने जो अपर सरफेस जो ग्राउंड सरफेस टा the piezometric surface ठारू कम माने if the ground surface level is lower than the piezometric surface then water टा कोन हो बाहर पळे आछो the water gushes out of the well up to the level and thus a flowing well is resulted अब ता कहया कथा जे एटा देखो सपोज एटा आमे वेल टा खोली एठी बुझे तो यहीटा तुम ग्राउंड सरफेसटा ये जाइए बुझे तो से कौन जिते बड़े तुम ये ग्राउंड सरफेसटा वेल को कट कला बुझे तो आ वाटर जो लेवलटा राइज करूला यहाँ पिजियोमेट्रिक सरफेसटा ये ग्राउंड सरफेस ठार ऊपर पड़े आइला ताने वाटरटा कौन हम फ्लो कर कथा सहीटा पिजो देख सिंपली आम जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ुले गोटे वाटर टेबुल पाई वाटर टेबुल माने कौन यहाँ हूँ अपर लेवल सरफेस ऑफ द वाटर मैंने गोटे वाटरटा या वाटर गुड़ाक अच्छी यार अपर सरफेस को कहे वाटर टेबुल इट मे बी इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन इट इज ए कर्व लाइन इट डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफिकल स्लोप वेदर इट इज सम रीजन इट हैज अ हाई एलिवेशन इन सम रीजन इट हैज अ लो एलिवेशन बुझे तो जमी वाटर टेबुल कथा कही एटी सेमती से कहला ये सिंपली गोटे जिनस कौन ना वेलटा आम खोलुचे गोटे एक्विफर भितर को आटा हूँ कौ एक्विफर कन्फाइंड एक्विफर एटा भी मन रखता है आर्टेसियन वेल और पिजियोमेट्रिक सरफेस गुड़ाक तुम कन्फाइंड एक्विफर को रिलेटेड अच्छी तो यदि कन्फाइंड एक्विफर आम यदि गोटे वेल खोलुचे वेल खोलवा द्वारा से कन्फाइंड एक्विफर जो वाटर था मैंने प्रेसराइज कंडीशन में था मैंने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंडीशन सो दैट वाटर गुड़ाक राइज कर अपवर्ड डायरेक्शन को आसबे आ अपवर्ड डायरेक्शन जो वाटरटा राइज करके आसबे जदि सेटा ग्राउंड सरफेस को कट करीगला ताले वाटरटा फ्री फ्लो कर दैट इज फ्लोइंग वेल कह आ जदि ग्राउंड सरफेस को कट न कला कह नॉन फ्लोइंग वेल तो क्लीयरली हाँ सहीटा हूँ फ्लोइंग वेल से कथा से कहते से जो राइज कला जो पर्यंत राइज कर दैट अपर लेवल को कह जाए पिजियोमेट्रिक सरफेस बुझेगा तो क्लीयरली If the ground surface level is lower than the piezometric surface, water gushes out of the well up to that level and thus a flowing well is resulted. When flowing well type develop. Confined aquifers are also known as a pressure aquifer or artesian aquifer. Confined aquifer को कौन कहा जाए? Pressure aquifer भी कहा जाए, artesian aquifer भी कहा जाए. कहना confined aquifer रे uniform thickness देखो ना नीचे देखो बोले. ये देखो कितने uniform thickness में almost equal लगुची, है ना? यूनिफॉर्म थिकनेस सो पैरेलल एमाने पैरेलल माने सॉरी यूनिफॉर्म थिकनेस थांती एमानकर बुझिला तो एंड आल्सो प्रेशर वाटर गुड़ाक प्रेशराइज कंडीशन में थांती सो दैट इट इज कॉल्ड प्रेशर एक्विफर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टेसियन एक्विफर कहीं ना कन्फाइंड एक्विफर ही आर्टेसियन एक्विफर होची एंड द फ्लक्चुएशन इन द वाटर लेवल ऑफ द कन्फाइंड एक्विफर गोटे कन्फाइंड एक्विफर माने जो वाटर लेवलटा कन्फाइंड गोटे कन्फाइंड एक्विफर जो वाटर लेवलटा माने जो फ्लक्चुएशन होची रिप्रेजेंट्स द पिजियोमेट्रिक सरफेस एलिवेशन एट दैट पॉइंट ता कहया कथा जदि गोटे माने कन्फाइंड एक्विफर जो वेल खोलिबा द्वारा जो वाटर लेवलटा जो राइज करूची तो डिफरेंट सटल लेवल को जो राइज करूची सेटा होची डिफरेंट पिजियोमेट्रिक सरफेस बुझला तो क्लियरली ताना हमें पिजियोमेट्रिक सरफेस ई डायग्राम जानि गेले कन्फाइंड एक्विफर और पिजियोमेट्रिक सरफेस और तुमर फ्लोइंग वेल और नॉन फ्लोइंग वेल आउला आर्टेसियन वेल तो प्रथम कौन है आम जान जे आर्टेसियन सिस्टम डेभलप गोटे कन्फाइंड एक्विफर रिक्वायर्ड आ कन्फाइंड एक्विफर हूँ कौन हो जोटा कि तुम यूनिफॉर्म थिकनेस एक्विफरटा द वाटर प्रेजेंट इन दैट एरियाटा मन देख शुणुता द वाटर प्रेजेंट इन दैट एरिया व्हिच इज अंडर द कौन व्हिच इज अंडर प्रेशराइज कंडीशन आउ इफ वी डाउन द वाटर टेबल तलू को आम जिते जावा सेते आमर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज मोर दैन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ इफ ए डिगिंग ए वेल जदि आम गोटे वेल खोलिबा व्हेन इट पेनेट्रेट्स और इंटरसेक्ट द कन्फाइंड एक्विफर द वाटर अंडर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंडीशन
that got rises towards the upward direction, and that rising upward direction, the level of the upper surface of the water, that is called piezometric surface. If that piezometric surface which is cutting the ground, if I intersect the ground, hala, and the water ta freely flowing towards the ground surface, that is called flowing well. If the water level ta does not rise up to that level, so that the piezometric surface does not intersect the ground surface, that means that is non-flowing well. That means there is no flow of water. बुझला तो क्लियरली डायग्राम गुड़ा देखियो कहीदेली सब कहला oases of a desert area are chiefly supported by the underlying artesian system है oases टा होची गोटे of desert area are chiefly supported by the underlying artesian system, and wherever confined aquifers are intersected by the ground surface oases develop है। नेक्स्ट आसला तुमर थर्माल स्प्रिंग्स एंड गेजर्स है यहाँ तुम्हें भल्कान भी पढ़ एठी भी पढ़ुच यहाँ वाटर रहा पढ़ा थर्माल स्प्रिंग पढ़े भल्कान भी पढ़ेबी है। थर्माल स्प्रिंग कौन व्हाट इज थर्माल स्प्रिंग स्प्रिंग माने कौन जानी स्प्रिंग जानी जदि कौन हुए ना आक्विफर बा वाटर टेबुलटा ग्राउंड सरफेस जो वाटर टेबुलटा अच्छी सेटा जदि तुम कौन हुए ना ग्राउंड सरफेस को कट करदे सपोज यहाँ वाटर टेबुल बुझे तो वाटर टेबुल जो ग्राउंड सरफेस यहाँ ग्राउंड सरफेस जाइए कट करदेला तेना वाटरटा ऊपर को बाहर दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग स्प्रिंग आम कौन जानी ना द ट्रांसफर ऑफ वाटर बा मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सबसरफेस रीजन टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस दैट इज कॉल्ड तुमर कौन से कहुए स्प्रिंग माने वाटरटा डिस्चार्ज हो वाटर रिलीज हो द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द सबसरफेस रीजन बा ग्राउंड माने ग्राउंड अंडरग्राउंड सरफेस टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस को आसिले ताकू कहुए स्प्रिंग स्प्रिंग में भी ड्यू टू द फल्टिंग एक्शन और ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस और ड्यू टू द बासाल्ट पोरस रॉक्स रे कि ना कौन रॉक रे ब्रेकडाउन गैप आसिले तो से दैट वाटर गुड़ाक पलि आसे तो से कह थर्माल स्प्रिंग कौन थर्माल स्प्रिंग हो टेम्परेचर बा हॉट स्प्रिंग तक कहुए हॉट वाटर बाहर से देखिए कौन लिखाई थर्माल स्प्रिंग होची थर्माल स्प्रिंग और हॉट स्प्रिंग लिखाई थर्माल स्प्रिंग्स और हॉट स्प्रिंग्स आर natural seepage of hot water माने माने हाइट माने मैग्मार जो तुम जान मैग्माटा कौट आस इंटेरियर ऑफ द अर्थ अपवर्ड डायरेक्शन को आस भल्कान होती सेटा गोटे कौन लिक्विड मैग्माटा जो थी कि मिनरल एंड सम ऑफ द गैस कंटेंट कि बहुत डिफरेंट कंटेंट रही किंतु हाइड्रोथर्माल जो थर्माल स्प्रिंग बा हॉट स्प्रिंग रे कौन हुए डिफरेंट टाइप कौटी हाइड्रोथर्माल फ्लूइड भी आसे हाइड्रोथर्माल फ्लूइड माने किसी फ्लूइड मैटर आसते जो थे कि किसी मिनरल कंटेंट था तो सेटा फ्लूइड गुड़ाक सेमती नॉर्मल वाटर आसे भी बुझे तो हट वाटर भी आसती तो से अनुसार ता ना गुड़ाक अलग अलग अच्छे हम पढ़ा आगक से कुछ फॉर द वार्मिंग ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड ए हीट एनर्जी मस्ट बी फ्रॉम स्टिल हॉट रॉक्स ऑफ द मैग्मा एंड जियोथर्मल ग्रेडियंट बुझे तो से कह द थर्मल स्प्रिंग्स आर hot springs are natural seepage of the hot water and hot water seepage of towards the ground surface that is called thermal spring. For the warming up of the water required heat energy माने जितेबाला गोटे वाटरटा को आम वार्म करुचे ताने हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कर मस्ट बी फ्रॉम स्टिल हॉट रॉक्स ऑफ देन मैग्मा एंड जियोथर्मल माने से टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस आ मैग्मार एक्टिविटी द्वारा ये होती हॉट वाटरटा बाहर then water circulating around these regions are warmed up hala and hot springs are found in areas of a volcanic activity hala hot spring गुड़ा कौन होची ना तुम जो एरिया रे देखा जाती से गुड़ा मेनली volcanically active area गुड़ा volcanic activity area and whilst most of the hot spring and geysers are located in the Yellowstone National Park USA रो गोटे national park अछि Yellowstone National Park आउटला आइसलैंड आउटला न्यूजीलैंड ये रीजन गुड़ाक देखा बुझे तो थर्माल स्प्रिंगटा कौन कहला थर्माल टर्म गुड़ाक बढ़िया कि मन रखुव कमती कौ टर्म जो न बुझे मत फोन कर पचार थर्माल स्प्रिंग और हॉट स्प्रिंग
थर्माल स्प्रिंग होची थर्माल मीन्स कौन टेम्परेचर ताने हॉट स्प्रिंग ताने स्प्रिंग रे आमे कौन जानिथिले आगुरु जे वाटरटा जदि डिस्चार्ज होची बा रिलीज होची फ्रॉम द सरफेस रीजन एठी कौन हम से हॉट वाटर बा वार्म वाटर से हॉट वाटर और वार्म वाटरटा कौटू आसी ड्यू टू द मैग्मेटिक एक्टिविटी ड्यू टू द मैग्मा चैम्बर ये सब वोल्केनिक एक्टिविटी एगुड़ा गुड़ा आसो से आइदर मिनरल कंटेंट थाई पारे न भी थाई पारे एटा एग्जांपल कोडी नेशनल पार्क ऑफ यूएसए जोटा कि येलोस्टोन आउटला आइसलैंड आउटला न्यूजीलैंड ये तीनटा पार्ट रे देखा जाउछ बुझला तो तापर टू डेवलप ए हॉट स्प्रिंग फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट एक्जिस्ट यानी गोटे हॉट स्प्रिंग टा डेवलप पाई कौन कौन कंडीशन सब रिक्वायर्ड अच्छी बुझला तो कौन कंडीशन सब रिक्वायर्ड अच्छी से कौन आडेक्वेट ग्राउंड वाटर सप्लाई ग्राउंड वाटर आडेक्वेट सप्लाई हम फिशर्स एंड फ्रैक्चर्स दैट ओपन एट द सरफेस बुझला तो से कौन मैंने कह कथा जे आडेक्वेट ग्राउंड वाटर वाटर आडेक्वेट आम सप्लाई करवा आ फिशर्स रॉक रे माने धरा जो सपोज गोटे हॉट वाटरटा ऊपर तलू ऊपर को आसूची ताने जदि फ्रैक्चर बा फिशर थिबो सेटा सिना से ऊपर को आसीबो सेटा सिखुची ताने आडेक्वेट ग्राउंड वाटर सप्लाई करियो पड़िबो एंड आल्सो मस्ट बी प्रेजेंट ऑफ फिशर एंड फ्रैक्चर और फिशर गुडा को देखा जिवो दैट ओपन एट द सरफेस एंड द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एवं बहुत गुड़ा सोर्स थी जोटा कि हीट एनर्जी बाहर थी एंड द पेनेट्रेशन वाटर is heated by the internal heat of rocks and when the water table intersects the ground surface hot water seeps out forming the hot spring मैं ता कह सिंपली एति जाए नॉर्मल जिनस आम पढ़ीचे हॉट स्प्रिंग कौन से कहूँ हॉट स्प्रिंग कहले कौन कहला ना एग्जांपल तो येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए आइसलैंड आउला तुम न्यूजीलैंड गला वाटर देखा जाए हॉट स्प्रिंग कहले कौन इट इज द स्प्रिंग थ्रू व्हिच द हॉट वाटरटा कम्स आउट टू द सरफेस है प्रथम पॉइंट यहाँ एटे कौन होना एठी तुम हॉट स्प्रिंगटा हूँ हाई टेम्परेचर रिजन जो थे कि ग्राउंड सरफेस को हॉट वाटर और मिनरल सॉल्यूशन वाटर गुड़ाक कमिंग आउट आउ हॉट स्प्रिंगटा तुम कौन करे ना हॉट स्प्रिंग हम डेभलप आमको आडेक्वेट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर सप्लाई करा पड़ो आउ नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ हीट पाइबा पड़ो आउ डिफरेंट क्रैक्स और फिशर और फ्रैक्चर डेभलप हवा दरकार रॉक रे जो दैट सो दैट माने जोटा तुम कम्स आउट माने हॉट वाटर गुड़ाक है ओबियसली से कह ओबियसली वार्म वाटर इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी ए जो डिसोल्यूशन एक्टिविटी माने वार्म वाटर कैपेसिटी अच्छी जोटा कि डिसोल्यूशन करने एंड सर्कुलेटिंग हॉट वाटर डिजॉल्व्स सेवेरल मिनरल मैटर एंड द वाटर ऑफ हॉट स्प्रिंग आर फाउंड टू बी ए मेडिसिनल वैल्यू से कहला जे जो हॉट स्प्रिंग जो वाटर गुड़ाक बाहर तार मेडिसिनल वैल्यू अच्छे मेडिसिन भाव में यूज कराए and some of the dissolved several matter भी थाए several matter है तापर कहूँ however same carry sulfur and are phosphorus ना कौन odorous सल्फर कंटेंट गुड़ा थाए मेनली हॉट स्प्रिंग गुड़ा है तमें से कहूँ हॉट स्प्रिंग कहले सिंपली एटा हूँ हॉट वाटर गुड़ाक थ्रू द स्प्रिंग जमी ग्राउंड को कट कर पलि आउट दैट हॉट वाटर डेभलप ड्यू टू द adequate amount of ground water supply आउला magmatic activity and different sources of heat energy एगुड़ा सब बुझे तो आउटाक मेनली मिनरल कंटेंट सल्फर एगुड़ा सब था जोटा कि इट इज यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पजेस यूज कराए बुझे तो यहाँ हॉट स्प्रिंग देन आसला गीजर्स गैस कंटेंट गुड़ा बाहर सो गीजर्स आर ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग फ्रॉम व्हिच अल्टरनेटिंग हॉट वाटर एंड द स्ट्रीम इरप्टेड स्टीम है से कह गीजर्स गुड़ा कौन कि तुम स्टीम गुड़ाक इरप्टेड बनती है हॉट वाटर खाली वाटर भी the principal mechanism of
eruption lies in the relationship of pressure and temperature. Boiling point of any liquid is elevated when there is an increase in pressure. ହେଲା possible mechanism of eruption of geysers may be geysers भी वन टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग कहले चले से किंतु तुमर कौन हुए हॉट वाटर बाहर आउ स्टीम जो गैस गुड़ाक बाहर है तो पॉसिबल मेकानिजम ऑफ इरप्शन ऑफ geysers may be as follows. Groundwater seeps into the कोटी सरफेस को फिशर थ्रू द फिशर एंड voids of hot rocks underground. These voids are connected to the pipe or conducting conducting open at the surface. It is going conduit which open at the surface. Connected to a pipe or conduits माने volcanic जो pipe गुड़ा है सेटा कहूँ जे जो अंडरग्राउंड रीजन जो हॉट वाटर गैस गुड़ाक थ्रू द पाइप volcanic पाइप द्वारा ऊपर सरफेस को आसती एंड टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज राइजिंग माने जो वाटर टेम्परेचर राइज कर जाए. हाउएवर वाटर इन द अपर पोर्शन ऑफ द conduits are less heated than the water in the lower portion of the geyser structure. माने वाटर जो गीजर रू जो वाटर गुड़ाक बा स्टीम गुड़ाक थ्रू द volcanic पाइप बा कंड्यूट्स थ्रू द ग्राउंड सरफेस को आसती. अपर पार्ट ऑफ द कंड्यूट्स बा ग्राउंड सरफेस जो गुड़ाक से ठंडा था एंड लोअर पार्टा मेनली हिटेड होता है. तो it happens so because lower part of the water is under pressure exerted by the overlying column of water and the temperature of both water exceeds 100 degrees Celsius but water does not boil. Temperature of bottom water exceeds 100 degrees Celsius. At the same time water in the conduit reaches boiling point and quicker and it expands. Expansion of water erupts a little amount of कौन हुए onto the surface. Expansion of water erupts a little amount of water onto the surface. Water surface ये करे and this reduces the internal pressure. एटा तुमरो रिड्यूस करे कौन इंटरनल प्रेशर को एंड रिलीज द प्रेशर रिड्यूसेस द बॉइलिंग पॉइंट. माने जदि प्रेशर टाको आम रिलीज करिबा बा प्रेशर टाको आम यदि कमेइबा ताले बॉइलिंग पॉइंट कौन हम बॉइलिंग पॉइंट तुमरो कमी जीवो एंड द इट टर्न्स वाटर अहेड. हाई टेम्परेचर टर्न्स टू द स्ट्रीम एंड प्रेशर इज बिल्ट अप. एटा किसी दरकार नहीं एटा किसी एनएसएस लिखाई एठू एति रीडिंग मारियार दरकार नहीं. खाली गीजर विषय जानते हो गीजरटा कौन बोली बरफ मार बुझे तो. नेक्स्ट आम देखा जे ए ग्रे से कौन कौन दरकार नहीं किसी. नेक्स्ट आम देखा जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कौन जो आम पढ़ी एति जो आम एपर्यंत जो पढ़ले एगुड़ा थी कौन सम ऑफ द आप्लाइड जोटा कि जियोलॉजी ग्राउंड वाटर विषय में आप्लाइड जिन जानले एगुड़ाक तुमको पढ़े सारी जोटा कि ओरिजिनल एंड डिपोजिशनल फीचर आर वीडियो अलरेडी जाइए किंतु एठी मु जस्ट ओवरऑल आउट कहले जेला तो ओरिजिनल फीचर कौन कहूँ ना आज द जियोलॉजिकल एजेंट्स ग्राउंड वाटर ऑल्सो है collect the earth's surface through its capacity to erode transport some of the material. Geological aspects have been described below. है बुझला. तान आसला इरोजन. इरोजन द्वारा केमिति आमे
कौन हो ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर सब जो फीचर सब पाँच इरोजनल फीचर से कुछ ग्राउंड वाटरटा क्यारीज ऑन इरोजन थ्रू सॉल्यूशन एक्टिविटी जो धर्म गोटे ग्राउंड वाटरटा जाऊँगी तार कंपोजिशन गोटे थी आ जो रक दे पास कर रक्र भी गोटे कंपोजिशन थी जब दुईटाक रक्स रिएक्शन है धोई नहीं बस कौन ग्राउंड वाटर क्यारीज ऑन इरोजन थ्रू द सॉल्यूशन एक्टिविटी and slow movement of water solution activity goes on as groundwater moves slowly. The movement of the water solution activity goes on as groundwater moves slowly, remaining more times in a region, and the more reaction and the most soluble rocks are rocks, salts, and gypsums, but widespread are limestone. ग्राउंड वाटर मोर जो पास कर डिफरेन्ट रक लेयर देखिए रक्र कंपोजिशन अनुसार ग्राउंड वाटर कौन हो ग्राउंड वाटर रिएक्शन हो ग्राउंड वाटर रिएक्शन हवा द्वारा रक गुड़ाक डिजल्व होगी वाटर सल्यूशन आकार पड़ो सल्यूशन है जोटा कि तुम मैंने से कहूँ मोस्ट सल्यूबल रक्स आर कौन जोटा कि जिप्सम एंड सॉल्ट बुझला तो देन आसला कोरोजिव एक्शन कोरोजिव वाटर पासेस से कौन कोरोजिव एक्शन वाटर पासेस थ्रू द जॉइंट्स और फ्रैक्चर जो कह जॉइंट कि फ्रैक्चर लाइमस्टोन रक्रे जाए सपोज गोटे लाइमस्टोन रक्रे जॉइंट आ फ्रैक्चर जॉइंट आ फ्रैक्चर मैंने क्रैक्स गुड़ाक जॉइंट गुड़ा एंड एनलार्ज देम डिसोल्यूशंस ता कहवा कथा जे सपोज गोटे गोटे रक्रे फ्रैक्चर बा जॉइंट होती ग्राउंड वाटर सल्यूशन गुड़ाक जाऊँ ड्यू टू द कोरोसिव एक्शन से कौन हुए से फैक्टर थ्रू रे पशिक रक्टा खाई देन केव caverns with passing है so caverns with a passage surrounding 240 km of length of USA are spectacular evidences for the slow but steady solution activity. However, rate of solution in which water contains carbon dioxide, but it decreases with increasing dissolved content. बुझिला तो carbon dioxide content decrease करिछबो by the dissolving action of carbon dioxide. Limestone is essentially calcium carbonate and reacts as रिएक्शन बेले पकई दे रिएक्शन CaCO2 प्लस H2O जोटा कि वाटर सहित कार रिएक्शन होची कैल्शियम कार्बोनेट बा लाइमस्टोन जेला तो हवा द्वारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनला जेला तो क्लियरली इसला कास्ट टोपोग्राफी तब इसका पॉजिटिव फीचर और नेगेटिव फीचर बुझला तो कास्ट टोपोग्राफी कौन देखिए कैटेगरी इरोजनल फीचर रे से कुछ एन इरोजनल फीचर आर concentrated to the so all erosional feature are concentrated to the kodi the result in topography while shallow at depression shallow so which all the erosional feature concentrated at the but to the terrain different terrain रहता है terrain एटा बुझला तो and the resulting टोपोग्राफी विथ सैलो डिप्रेशन मैंने गोटे सपोज गोटे टोपोग्राफिकल एरिया अच्छी जो कि सैलो डिप्रेशन कम डेप्थर डिप्रेशन एंड सैलो माउंट्स छोट छोट माउंट्स गुड़ाक इज टर्म्ड कास्ट टोपोग्राफी से कहुए कास्ट टोपोग्राफी कह कथा जो जो डिफरेन्ट टेरेन बा रिजन रे जदि माने सैलो डिप्रेशन बा कौन छोट छोट हिल्स डेभलप है
ताको आम कह इरोजनल फीचर ऑफ द ग्राउंड वाटर बाय द सॉल्यूशन एक्टिविटी। तो वर्ड आल्सो मीन्स बेयर स्टोनी ग्राउंड, ये बेयर स्टोनी ग्राउंड भी कह जाए। एंड द कास्ट टोपोग्राफी includes several erosional forms, but one or more features are found in one area. So the absence of a the absence of surface streams in characteristics of karst topography. कास्ट टोपोग्राफी की माने कैरेक्टरिस्टिक माने कास्ट टोपोग्राफी रे तुमर स्ट्रीम रो एब्सेंस थाए सेठी बुझले तो एवढा किसी एते नहीं देखिए कास्ट एति जानते कास्ट टोपोग्राफी होची ड्यू टू द सॉल्यूशन एक्टिविटी ऑफ ग्राउंड वाटर देयर इज सम शैलो डिप्रेशन और सम माउंट्स लाइक फीचर डेवलप होते ताको कहे कास्ट टोपोग्राफी जोड़े एति मन तो ग्राउंड वाटर सॉल्यूशन एक्शन द्वारा जोटा एटा होची कास्ट टोपोग्राफी। तो कास्ट टोपोग्राफी में डेवलप होए ए सॉल्युबल रॉक एसेंशियली लाइमस्टोन अफर्स जदि गोटे कास्ट टोपोग्राफी केतोळे हो ना जेतोळे गोटे बेसमेंट रॉकटा तुम कोन हितबो लाइमस्टोन बा कैलकारियस हितबो एंड द लाइमस्टोन बेड इज थिन एंड वेल जॉइंटेड हितबे। लाइमस्टोन रॉक गुरा कोन हितबे थिन पतला हितबे एंड वेल जॉइंटेड एंड देयर इज ए वैली एडजॉइनिंग ऑन अपलैंड हैला देयर इज ए वैली एडजॉइनिंग एन अपलैंड है आ गोटे देयर इज एडेक्वेट रेनफॉल बुझेगा। तो ताने कास्ट टोपोग्राफी होगापाई कौन कौन गोटे से एरिया रे लाइमस्टोन रॉक बा कार्बोनेसियस रॉक कैलकारियस रॉक थिबे आ सेठी ग्राउंड वाटर रो सॉल्यूशन एक्शन होइतबो बुझेगा। तो आ सेठी कोन आ कोन हितबो ना सम ऑफ द स्मॉल माउंट्स और वैली लाइक फीचर थिबो आ एडेक्वेट रेनफॉल भी होइतबो एटाला कास्ट टोपोग्राफी रो क्राइटेरिया। तब कहला व्हाट्स मोस्ट ऑफ द कास्ट टोपोग्राफी इज डेवलप्ड इन द लाइमस्टोन रीजन ओब्वियसली मन रखिए जी आम पॉजिटिव नेगेटिव बा इरोजनल बा डिपोजिशनल फीचर पढ़ुले ये ग्राउंड वाटर सब गुड़ाक लाइमस्टोन रॉक कैलकारियस रॉक से कौन स्टोन रीजन कास्ट टोपोग्राफी इज रिजल्टेड एज द सॉल्यूशन एक्टिविटी इज कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग सर्टेन प्लेन्स ऑफ वीकनेस लाइक जॉइंट्स बुझे। तो बुझे। तो एभव ऑल फॉर सॉल्यूशन एक्टिविटी देयर शुड बी सफिशिएंट रेनफॉल है कहीं सॉल्यूशन एक्टिविटी हेल्ले तो सही वाटरटा परकुलेट कर ग्राउंड वाटर सॉल्यूशन आकार जीव रिएक्शन कर। फॉलोइंग इज एन अटेम्प्ट टू क्लासीफाई से फॉलोइंग इज एन अटेम्प्ट टू क्लासीफाई वेरियस फॉर्म्स as the result of groundwater solution activity. It is based on the basis of the a form encloses a space or occupies space. As such space occupy the forms are termed as a positive feature and forms enclosing spaces are called as negative feature. and एमती पॉजिटिव फीचर नेगेटिव फीचर डिप्रेशन थिले नेगेटिव और ठीक रीज लाइक स्ट्रक्चर थिले पॉजिटिव फीचर एटा पढ़िया पॉजिटिव नेगेटिव फीचर किंतु ये जो पार्ट आप पढ़ी ये पार्ट गुड़ा किसी देखिए जोड़ा कि इम्पोर्टाट ना ये खाली जस्ट इरोजनल कास्ट टोपोग्राफी कंडीशन कौन कौन मन रखिदेव कास्ट टोपोग्राफी कौन ये रिएक्शन मन रख बुझे। तो आर्टिसियन सिस्टम मन रखिए बुझे। तो आज था आम नेक्स्ट क्लास से पॉजिटिव नेगेटिव फीचर पढ़ा डिपोजिशनल इरोजनल आगे।